Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zain Abedin. Today we are going to study about criminal justice system. In this lecture we will discuss about what is criminal justice system and what are the objectives of criminal justice system and components of criminal justice system. Let's start. What is criminal justice system? Basically, criminal justice system is one of the most important ingredient of any state in the world. Criminal justice system describe the offenses, punishment, procedure, and provide a way to punishment for those who break the law. Criminal justice system is a method of punishment, is a procedure of punishment, provide a procedure of punishment for those who break the law. The criminal justice system is the set of laws and principles which are applied on convicted on his offense. बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक ऐसा लॉज है, वो ऐसे प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं विच आर अप्लाइड ऑन कन्विक्टेड, विच आर अप्लाइड ऑन ऑफेंडर ऑन हिज ऑफेंस. Without effective criminal justice system, any society or state cannot survive for a long time. क्योंकि criminal justice system जो है ये वहाँ का एक मेन किरदार अदा करता है. अगर criminal justice system नहीं है सोसाइटी में तो वहाँ पर क्या होगा? There is no peace. There is no society for long time. What is the definition of criminal justice system? The criminal justice system is the set of laws and rules which are applied on offenders on their offenses. If we talk about the objectives of criminal justice system, what are the main objectives of criminal justice system? To protect the public from crime, to protect the rights of victims, protect the rights of public, to maintain peace, to ensure the safety of public by crime, to control crime, to rehabilitate criminals. These are the objectives of criminal justice system. अगर ये criminal justice system नहीं होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर अमन नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, क्राइम की जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा होगी, क्रिमिनल्स जो हैं वो आज़ाद होंगे, ठीक है, लोग जो होंगे उनकी सेफ्टी नहीं होगी, लोगों के राइट्स जो हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी फॉर लॉन्ग टाइम. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जो पुलिस है वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है. उसके बाद कोर्ट्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, उसके बाद एजेंसीज फॉर डिटेनिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफेंडर्स सच एज प्रिजन, प्रोबेशन एंड पेरोल. पुलिस क्या है? पुलिस इज द सिविल फोर्स ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम and the maintenance of public order. What is the role of police? Police body of officers. जो पुलिस होती है वो एक ऐसी बॉडी होती है जो ऑफिसर्स होते हैं और ये स्टेट की तरफ से होती है, रिप्रेजेंटिंग द सिविल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. पुलिस टिपिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, enforcing the law, to prevent the crime, to detect the crime and investigating criminal activities. If we talk about the court, a body of people presided over by a juries, judges, attorneys or magistrate and acting as a tribunal in civil and criminal cases such as arbitrators, conciliators. This is the body of court. Prosecution, this is prosecution, Prosecution. The prosecution, the side of a legal case which argue that a person who is accused of a crime is guilty. Role of prosecution. Prosecution collaborate with police, investigate the violation of law, recommended sentence, to evaluate the evidence. What is probation and parole? What is the agencies of probation? The probation services is the lead state agency for assessing and managing offenders, people convicted of an offense. वो offenders जो कि convicted है, जिन्होंने कोई ना कोई crime किया है, offense किया है community के अंदर, society के अंदर. प्रोबेशन इज़ ग्रांटेड बाय जज इंस्टेड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट. अच्छा, ये जो प्रोबेशन होती है ये ऐसे नहीं मिलती. अगर हम देखें प्रोबेशन का कि प्रोबेशन लाइफ में कितनी बार मिल सकती है तो सिर्फ एक टाइम मिल सकती है, और ये भी कुछ जो है उन चीज़ों को देख के दी जाती है. ऑफेंडर है उसका बैकग्राउंड देखें, उसका स्टेटस देखें, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर प्रोबेशन जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाती है. वेयर एज पेरोल इज़ फॉर पर्सन हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम and have already served the time in prison.
जबकि जो प्रोबिशन है वो प्रिजन के अंदर उसने टाइम नहीं गुजारा है, उसको कोर्ट की तरफ से दी जाती है, और ये जो पेरोल है ये ऑलरेडी अपना टाइम जो है वो सर्व कर चुका है प्रिजन के अंदर। द टेम्परेरी और परमानेंट रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ सेंटेंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर। ये फॉर एग्जांपल अगर 10 साल की किसी को सज़ा हुई है, तो उसने जो है 8 साल गुजार दी है या 5 साल गुजार दी है जेल के अंदर, तो उसके बाद उसका हम बिहेवियर देखेंगे कि उसका प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका बिहेवियर है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर उसको पेरोल जो है वो दी जाती है। प्रिजन जो होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम कन्विक्टेड जो होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, उनको हम वहाँ पर उनको रखा जाता है। अ प्लेस इन विच पीपल आर लीगली हेल्ड एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम दे हैव कमिटेड और वाइल अवेटिंग ट्रायल। तो वहाँ पर जो कन्विक्टेड हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर जो है अपने ट्रायल के लिए जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि फिर उनका ट्रायल होगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्कस किया। व्हाट इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके हम अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।